Learn the third law of Mendel. So the question which you're going to write is write down the third law of Mendel or the third law of inheritance proposed by Mendel. So when you talk about the third law, it says when hybrid possess two pairs, hybrid matlab they are talking about the resultant product from the parents. Now I'm taking an example of purple which is fused with round seed. Okay, purple colored flower and round colored seed, which is going to be crossed with white color flower and wrinkled seed. Now what is going to happen? We are going to make gametes, right? तो ये बने गैमेट, इसका गैमेट है ये, राइट? सो अब हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या होगा? What do we get? Capital P, small p, capital R and small r, right? This is, what do you see here? Purple color, even though ये purple color इसके साथ भी है, राउंड के साथ भी है, रिंकल के साथ भी है, तो भी पर्पल कलर की जो क्वालिटी अलील का है, इट विल नॉट लूज when it is going to easily, it will, if I'm talking about the gamete formation, let's, for example, I'm just starting with gamete formation for you to be more precise. P, it was like this, no? P, small p, then capital R, small r, right? Now how do you form a gamete here? It has full independence. Capital P can fuse with capital R, capital P can fuse with small r. So it is independent to fuse with, or we can say combine with the other allele irrespective of वो किसके साथ है, इसके साथ है या इसके साथ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. It can easily form gametes. तो यहाँ पे क्या बनेगा gametes? Capital P and capital R, capital P and small r. Next gamete, small p and capital R, small p and small r. So the fourth one is small p with capital R, small p with small r. So how many gametes has been made? 1, 2, 3, 4. So these are the gametes. So gamete formation में कैसे ये एक एलील दूसरे एलील के साथ कंबाइन हो रहा है? इट इज़ द क्रोमोसोम. एलील का मतलब ही क्या है? दिस इज़ वन क्रोमोसोम, दिस इज़ सेकेंड क्रोमोसोम, दिस इज़ वन क्रोमोसोम, दिस इज़ सेकेंड क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम के अंदर देयर इज लिंकिंग, दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टुगेदर. आर यू गेटिंग दैट? These are going to be more clear to you when you do the there are like 4-5 chapter we are going to do that particular chapter, then it will be more clear. But right now just understand what is law of independent assortment. When a hybrid possessing more than 2 characteristics, okay, 2 characteristics, जैसे अभी क्या था, purple भी था और round भी था, we had the color of the flower, we were talking about 2 characteristics. Okay, so the law was stating, let's read the law once again. When hybrid possess 2 pairs of contrasting characters or factors or alleles, they will form gamete. Factor in each pair separately. ऐसा नहीं होता P बोलेगा कि मैं R के साथ हूँ इसीलिए I cannot combine with small r. ऐसा नहीं होता. Independent of who is there with them, independent. This is one chromosome, this is another chromosome. अगर यहाँ पे P है और यहाँ पे small p है, this is father's chromosome, this is mother's chromosome, right? It doesn't make any difference. अगर ये इसके साथ है तो भी जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, दिस इज गोइंग टू बी सेपरेटेड, दिस इज गोइंग टू बी सेपरेटेड. लेकिन जब सेपरेट होते ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ लेते हैं और दे कैन सेग्रीगेट, दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन कंबाइन विथ पी
P will combine with capital R, P will combine with small r, the other characteristics. That is what they are saying, independently segregate of each other. So कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ कौन है पैर में, जब वो गैमेट बनते हैं वो इंडिपेंडेंटली पेयरिंग कर सकता है. दैट इज़ व्हाट इट सेज, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. राइट. Now let's understand what is a back cross. When we talk about back cross, when F1 individual is crossed with the parent, okay, it is basically self to get. F1 individual is obtained in a cross wherein the cross is with one of the two parents. It can be dominant parent, it can be recessive parent, किसी भी parent के साथ हो तो you call that as a back cross. लेकिन test cross में it is something very important. It will be crossed only with homozygous recessive parent. For example, you have got two characteristics here. One is small r, one is homozygous recessive and the other is dominant character. So dominant अगर ये है और recessive characteristics ये है, so जो offspring बनता है capital R small r, this will be crossed with this parent, right? This will be crossed with this parent. And when you are talking about crossing, remember one thing, इससे फ़ायदा क्या होता है? What is the benefit of doing a test cross? There's a question, many times it is asked. The benefit of getting the test cross is to find the parent, find out the genotype of the parent. अब अगर कोई बोलेगा डोमिनेंट का मतलब, अब मैं बोलूँगी कि round is dominant, but round can be written like this also, round can be written like this also, right? तो अब पता कैसे चलेगा कौन सा round था इसका parent? One parent we know, one is recessive, so this is the one parent. So this one parent will be crossed with this as well as this. So जो resultant product बनेगा, this is going to help us reach to the result that's called as the test cross. We'll be solving this test cross, so that will be more easy for you, okay? But you have to learn this. It's very simple. When you have two parents, one is dominant and another is recessive, जो आपका product है, it can get the characteristics from both the parents, right? But you have to understand कौन सा parent है. डोमिनेंट में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. सो कौन सा है पेरेंट नंबर 1? इफ पेरेंट नंबर 1 हैज़ टू बी लोकेटेड, वी हैव टू सर्च. एट दैट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू बैक क्रॉस, वी आर गोइंग टू डू टेस्ट क्रॉस. सो पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस इज फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट विद द, ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस, हाउ कैन यू डिटेक्ट, एंड गिव एन एग्जाम्पल. इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सिंपली राइट एन एग्जाम्पल. दो क्रॉस करना, दोनों क्रॉस में यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास दो पेरेंट हैं, ये भी डोमिनेंट, ये भी पेरेंट नंबर 1 हो सकता है, ये भी पेरेंट नंबर 1 हो सकता है. सो पेरेंट नंबर 2 तो हमारे पास कंफर्म है ही कि इट इज़ गोइंग टू बी स्मॉल आर, राइट? तो हम लोग इसके गैमेट्स को यहाँ लिख देंगे, इसके गैमेट्स को यहाँ लिख देंगे. तो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू राइट 2 Punnett square, the resultant product. What do you get the result? That the result is all flowers are with similar color here, right? And what about here? All the flowers are not white, half are violet and half are. So what is the result? The end product is the answer is capital R. Okay, so this kind of question will be asked. So it can be anyone. Then we have next topic, deviation. Deviation का मतलब होता है, जो मेंडल ने 3 लॉ बताए थे, लॉ नंबर 1 डोमिनेंस के बारे में, लॉ नंबर 2 सेग्रीगेशन के बारे में, प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ नंबर 3 इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो किसी के साथ भी अपना फ्यूजन कर सकता है. सो दैट्स द थर्ड लॉ, राइट?
सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज 3 लॉज, इनके नेगेटिव फॉर्म्स आए हैं, दैट इज डिविएशन. मतलब जो मेंडल ने बोला वो सही नहीं था. कुछ प्लांट्स में देयर वर सम contradictory characteristics that are called as deviations from Mendel's finding, that we are going to do in our class, next class.